नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। तो आज आमर आउ गोटे नुआ सेशन आउ गोटे नुआ एमसीक्यू सेशन आम डिस्कशन करबा को जाउछे सीपीआर और बीएलएस। सीपीआर और बीएलएस ऊपर क्वेश्चन और ता संगे से क्वेश्चन संगे आमे किछिटा पूर्वरु क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्वरु किछिटा थ्योरी मध्ये देखि दबा जहा द्वारा कि एकम बंद हे गला जहा द्वारा कि टिके रिवीजन हे जिवो हला टिके रिवीजन हे जिवो तब रिवीजन स्टार्ट करला पारे तापर आमे एमसीक्यूज गुडा सब डिस्कशन करबा हला। छोटिया सेशन हबो बेसी बड़ा सेशन नाही बट इफेक्टिव हबो। गोटे क्लास रे जेमिति तम मानकर सीपीआर और बीएलएस ऊपर जति भी सब क्वेश्चंस अछि जति भी सब फैक्ट्स अछि सब जेमिति आमे कवर करबा हला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुभस्मिता लिटिल गर्ल अंकित चंदन गुड मॉर्निंग। अच्छा तो ताहले स्टार्ट करबा क्लास एवरीवन समस्त के जल्दी जल्दी जॉइन हे जाओ। यस ठीक अच्छे तो समस्त जॉइन हो गले चलो ताले स्टार्ट करवा है निहारिका बबीता ओके लोकेश्वर हेलो हेलो चलो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टिके अप्रिशिएट दिस टॉम एंड जेरी है सीपीआर दोजी ठीक अच्छे। तो क्विक फैक्ट्स जहाँ जहाँ आम रिलेटेड अच्छी कौन adult compression rate होची 100 to 120 per minute। adult compression रो डेप्थ होची 5 to 6 cm हला 5 रो 6 cm बा वॉइस दबी गया सुची एबे ठीक आसिला अंकित एबे ठीक आसिला रितांजलि गुड मॉर्निंग लिटिल गर्ल थैंक यू एबे ठीक आसिला त एमे धरि गिर कहले ठीक आछी तो देन ते कहि दियो तापर स्टार्ट करबा। हाउ देखो adult compression depth होची 5 to 6 cm और rate होची हमरा 100 to 120 per minute। यस ठीक अछि। अच्छा adult CPR रेशियो होची 30:2 30 blows रे 30 compressions रे दीटा ब्लो। child to rescue ratio होची 15:2। advanced airway ventilation होची 1 breath per 6 seconds ठीक अछि। पल्स चेक होची हमर कोन लेस देन 10 seconds एईडी हमर as soon as possible सेटा को हमर चेक करा जिवो। शॉकेबल VF प्लस पल्सलेस BT VF प्लस पल्सलेस BT एडा हला तार शॉकेबल रिस्पांस गुडा। नॉन शॉकेबल कोन PEA और A systole then compression interruption as short as possible generally less than 10 seconds। infant to rescue compression da two thumb encircling technique रे हमें करछे दीटा thumb encircling technique रे हमें दिया जाउछे। child और infant compression depth होची 1 to 3 AP chest diameter। rescue breath duration होची more or less हमरो 1 seconds। key CPR principle होची push hard push fast and allow complete recoil हैला allow complete recoil। तो ये थिला किछिना हमरो छोटे छोटे फैक्ट्स ता रिलेटेड हैला। गुड मॉर्निंग आरती किछरा छोटे छोटे फैक्ट्स थिला ता रिलेटेड चला बे क्वेश्चन सॉल्व करबा। An adult patient is found unresponsive in the hospital corridor. After ensuring scene safety, the nurse checks responsiveness, breathing, and pulse. The patient has no normal breathing and no definite pulse within 10 seconds. What is the most appropriate next action? Start high quality CPR immediately. Give 2 rescue breaths before compressions. Reassess the pulse for another 30 seconds. Place the patient in the recovery position. कौन हबो क्वेश्चन नंबर 1 कौन करबा ना गोटे पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव देखा जाउछ हॉस्पिटल कॉरिडोर भितरे से सीन ताको देखला परे नर्स कोन चेक करछि रेस्पॉन्सिवनेस ब्रीदिंग और पल्स रेट को तार नॉर्मल ब्रीदिंग नाही और डेफिनेट पल्स मते 10 सेकंड भितरे हमर देखा जाउ नाही। तो सो एप्रोप्रिएट एक्शन कोन करबा सही फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित टोकेश्वर चंदन फर्स्ट तो सीपीआर दबा आरंभ करबा ना हाई क्वालिटी सीपीआर हला स्टार्ट। We need to start high quality CPR immediately. Yes. Chalo, question number 2. During single rescue adult CPR, the recommended compression to ventilation ratio is
Yes. Question number 2. 30:2 ratio. Yes, it is 30:2 है 30 टा compression रे दीटा rescue breath दिया जिवो adult मानक केस रे 30 टा compression रे दीटा rescue breath दिया जिवो. Next, during high quality adult CPR the recommended chest compression depth is depth टा कोन at least 5 cm but not more than 6 cm, exactly 2 cm, at least 7 cm, approximately 3 cm. कोन हबो हाई क्वालिटी अडल्ट सीपीआर देबा टाइम रे चेस्ट कंप्रेशन रो नॉर्मल डेप्थ ता कोन? यस सुदीप्ता, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. देवाशीष बी एटा कोन हबो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बट नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर्स हैला. 3 रा हेबा ए. यस विश्वरूपा, बबीता ए. ठीक अछि. डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ागो एडा आ किछ बेसी रिएसेस करबार नाही. Next, which chest compression rate is recommended during the high quality CPR in the adults? 60 to 8 compression per minute, 80 to 90 compression per minute, 100 to 120 compression per minute, more than 140 compressions per minute. More than 140 compressions per minute. Question number 4. It is C. Yes, Sangeeta, Sudipta, 100 to 120 compression per minute ratio रे हमरो high quality CPR गुडा को adult case रे दिया जाउची. आ जदी हमें देखिबा केते डेप्थ रे दिया जाउची 5 to 6 cm डेप्थ रे दिया जाउची और 30:2 होची तार compression to ventilation ratio. Compression to ventilation ratio. Next, which action is most important to ensure complete chest recoil during the CPR? Avoid leaning on the chest between the compressions, increase ventilation rate above 20 breaths per minute, pause every 5 compressions, compress continuously without allowing the recoil. Chest recoil time रे most important thing during the CPR. Yes, Niharika, Tilotama, Papita, हाँ, Rita, ठीक अछि. 5 टा कोन हबो? 5 टा कोन हबो? ए हबो. यस. डी हबोनी. अरे कंप्रेशन करियो पड़ियो ना हमहु 10 सेकंड भीतर कंप्रेशन उडा देबा को पड़ियो. We need to avoid leaning. कोन important एडी अवॉइड कथरा पचरचिबा. Avoid leaning on the chest between the compressions. हैला पूरा एक कथरा रे जाकी तारी ऊपर आवाज जीवनी हैला. Avoid leaning on the chest between the compressions. ठीक अछि. ओडा मोस्ट इंपोर्टेंट. नेक्स्ट, सब मोस्ट इंपोर्टेंट भीतर देखो एडा सब जिंस दरकार हैला किंतु सबरो इंपोर्टेंट ता कोन जे वी नीड टू फर्स्ट अवॉइड लीनिंग ऑन द चेस्ट बिटवीन द कंप्रेशंस हैला. नेक्स्ट, a rescuer is performing CPR with an advanced airway in place. Which ventilation strategy is most appropriate? Pause compression after every 30 compressions. Give 1 breath every 6 seconds while continuing the compressions. Give 2 breaths after every 15 compressions. Provide continuous ventilation at 20 breaths per minute. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 टा देखा जाउनी. ऑप्शन नंबर 4 टा टिके एडजस्ट करिया को दियो कैमरा टा. ओके, एबे विजिबल हबो. Question number 6. Question number 6. B. Ritanjali. Yes. Give 1 breath every 6 seconds while continuing the compressions. हैला प्रति 6 सेकंड रे गोटे ब्रेथ दिया जिबा while continuing the compressions. Next, during two rescuer CPR in an adult, which action best helps maintain high quality chest compressions? Switch the compressor approximately every 2 minutes or earlier if fatigued. Change rescuers only after 10 minutes. Stop CPR completely while changing the compressors. Continue with the same compressor until return of spontaneous circulation. Question number 7. Question number 7. कौन हबो? Option number A. A. अच्छा, तो switch the compressor approximately every 2 minutes or earlier if fatigued. है ना? 2 minutes if fatigued. If I don't look at the lesson, should I look at the ma'am? Ma'am will not give you a seat. Ma'am is not going to give you a seat. Chalo, next. Question number 8. Which finding most strongly suggests agonal breathing rather than normal breathing in a collapsed adult?
Regular chest rise occurring 12 to 16 times per minute, slow irregular gasping with absent normal breathing, quiet breathing with normal pulse, rapid deep regular respirations. Rapid deep regular respirations. Yes. Question number 8. After every cycle, 5 cycle change position. Yes. Question number 8 है slow irregular gasping with absent normal breathing. Slow irregular gasping with absent normal breathing. B होगा correct answer. ठीक अच्छी रूपश्री, दीपांजलि, गुड़िया, बबीता, रीता कर्मी. Yes. An AED becomes available during ongoing CPR. What is the most appropriate action? Continue CPR until emergency services arrive without using the AED. Apply the AED pads and follow device prompts as soon as possible. Check the pulse repeatedly before attaching the AED. Give 5 rescue breaths before turning on the AED. Question number 9. Question number 9. Question number 9. B. Okay. ठीक अच्छे. Option number B. Okay. ठीक अच्छे. मुझे adjust करथुली mic टा. Apply the AED pads and follow the device prompt as soon as possible. Yes, correct, Miss Rosa. Next. During AED rhythm analysis, the nurse should continue chest compressions throughout the analysis, hold the patient's hand to prevent the movement, ensure that no one is touching the patient, give rescue breaths continuously. Question number 10. AED rhythm time re कौन करेगा? We need to ensure that no one is touching the patient. No one is touching the patient. ठीक है जी? उत्कल केशरी, Miss Rosa, Ankit, Babita, Vinod. ठीक है. Next question number 11. After the AED delivers a shock, the next action should be immediately resume the chest compressions, check the pulse for 30 seconds, wait for the patient to regain the consciousness, give 2 minutes of rescue breath before the CPR. कौन करेगा? 10 सी. हाँ. 11 होची we need to AED delivery कला पर shock पर next action show होची कौन ना we need to resume the chest compressions. We need to immediately resume start पुणी आउथरे कर दबा chest compression हैला. ठीक अछि. Next question number 12. Which rhythm is classified as shockable during the cardiac arrest? सब देखथिले हमें shockable कोडा asystole, pulseless electrical activity, ventricular fibrillation ना sinus bradycardia. Ventricular fibrillation and pulseless tachycardia ए दीटा हो जाए हमारा shockable rhythms. Shockable rhythms. ठीक है? तो ये गला ऑप्शन नंबर सी. ये गला ऑप्शन नंबर सी. हाँ. Pulseless ventricular fibrillation और ventricular tachycardia है ना? Pulseless ventricular tachycardia ये दीटा हो जाए हमारा shockless shockable rhythms. Which rhythm is considered non-shockable? Non-shockable कोडा ventricular fibrillation और ventricular pulseless ventricular tachycardia এটা তো हो जाए हमारा shockable. Pulseless electrical activity और asystole
asystole ए दीटा होची हमर नॉन शॉकेबल रिदम्स हैला तो ऑप्शन नंबर डी हे जे बडी करेक्ट आंसर सुकांत डी कौन गिरे कौन कौच सी हम ए डी हम करेक्ट आंसर सी कौन डी डी अच्छा चलो नेक्स्ट होची 14 during adult CPR interruptions in the chest compression should ideally be as short as possible generally less than 10 seconds at least 20 seconds to assist the circulation 1 minute after every cycle continued until a palpable pulse is confirmed okay हाँ एसिस्टोल आउ हमर देखथिले बा पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सेडा होची हमर नॉन शॉकेबल रिदम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करो it is as short as possible generally less than 10 seconds as short as possible generally less than 10 seconds next question a patient is found unconscious but has a definite pulse and is not breathing normally the most appropriate action is to begin the chest compression immediately provide rescue breathing at an appropriate rate apply abdominal thrusts place the patient in Trendelenburg position a yes it is provide rescue breathing at an appropriate rate co rate रे दिया हवा at least one breath every 5 to 6 seconds one breath every 5 to 6 seconds ठीक अछि हां give the rescue breath yes cartoon ठीक अछि in an adult with a definite pulse but absent or inadequate breathing, rescue breath are generally given at 1 breath every 2 seconds, 1 breath every 3 seconds, 1 breath every 6 seconds, 1 breath every 10 seconds. सी ओके ठीक अछि हमर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अनुसार हमर ए जो येटा बाहरी छि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अनुसार हमर ए टाइप रो कोन इन्फॉर्मेशन दा जारी करा है ठीक अछि गुड मॉर्निंग मालती नेक्स्ट during bag mask ventilation excessive ventilation should be avoided primarily because it can increase the intrathoracic pressure and reduce the venous return, improve coronary perfusion pressure excessively, increase cerebral oxygen consumption, cause immediate ventricular fibrillation in all the patients. Question number 17. It is A. Increase the intrathoracic pressure and reduce the venous return. AHA guideline अनुसार करा जाउछि. Yes. Question number 18. The correct hand position for the adult chest compression is over the left fifth intercostal space, over the lower half of the sternum, directly over the xiphoid process, over the upper third of the sternum. Over the lower half of the sternum is the correct answer. Lower half of the sternum is the correct answer. ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 18 टा भी हवा टोकेश्वर सुकांत संगीता सुदत्त ओके ड्यूरिंग द BLS for a child the recommended compression to ventilation ratio with two rescuers is 30:1 15:1 15:2 30:2 yes Suchasmita Ashok Saishri it is 15:2 adult manaka pai boli sera 30:2 thila but
infants manako pai boli mane children's manako pai boli it is 15:2. Next, for single rescue CPR in an infant, the preferred chest compression technique is generally two thumb encircling hand technique, heel of one hand over the sternum, both palm placed over the chest, two finger placed on the sternum. Kon haba? Question number 20. Single rescue CPR. Ma'am Sukanta from WB, West Bengal. West Bengal. हाँ एडा को क्वेश्चन नंबर 20 रा कहलो मार्क करके कहलो क्वेश्चन नंबर 20. सिंगल सर्कुलर पचारची ना अरे सिंगल रेस्क्यूअर पचारची ना सिंगल रेस्क्यूअर पे बोली कोन द टू फिंगर शुड बी प्लेस्ड on the sternum एडा हबा अरे सिंगल रेस्क्यूअर पचारची डबल रेस्क्यूअर हेथिले से हमर एनसर्कलिंग कथारा हेथांता हैला टू थंब टेक्निक हां डी हबो करेक्ट आंसर समस्त भूल कहउछ डी हबो करेक्ट आंसर हैला टू फिंगर प्लेस्ड ऑन द sternum ठीक अछि वेस्ट बेंगल रु सुकांत कौन आमर इंटर स्टेट मत गलानी रिच अच्छा देखो नेक्स्ट एडा देखो एबे को during two rescuer infant CPR the preferred chest compression technique is two thumb encircling hand technique, one handed compression technique, two finger technique only, heel of hand technique. हाँ टिके क्वेश्चन देखो टिके ध्यान से देखो आसीबो किछ असुविधा नै ए केस रे हबा हमर टू थंब एनसर्कलिंग हैंड टेक्निक्स हैला टू थंब एनसर्कलिंग हैंड टेक्निक हैला ओके नेक्स्ट the recommended chest compression depth for an infant is approximately 1 centimeter, 1/3 of the anterior posterior diameter of the chest, about 4 centimeter, at least 6 centimeter, one half of the anterior posterior diameter of the chest. Question number 22. Question number 22. हाँ yes Pinky, Miss Rosa, Niharika, Cartoon, Rita Karmi. 22 कौन हम 22A संगीता 1 centimeter B yes B हबो हमरो कोन को होची 1.5 रु 4 centimeter जाय हैला 1.5 रु 4 centimeter जाय हमें देई परिबा. Next, a conscious adult suddenly develops severe airway obstruction and is unable to speak or cough effectively. Which action is most appropriate? Encourage the person to drink water, perform blind finger sweeps, begin abdominal thrusts, immediately start chest compressions while the person remains standing. Question number 23. कौन करेगा सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाउची आ स्पीकिंग आउट कफिंग रे डिफिकल्टी होची तो से केस रे we will be beginning our abdominal thrusts हैला we will begin our abdominal thrusts. Next question number 24. During the management of a choking infant with severe airway obstruction, the recommended sequence includes abdominal thrust followed by rescue breaths, 5 chest compression followed by 5 abdominal thrusts, blind finger sweep followed by back blows, cycle of 5 back slaps and 5 chest thrusts. कौन होगा question number 24. It is कहलो it is the cycle of yes Tokeshwar very good cycle of 5 back slap and 5 chest thrusts will be the correct answer. 24 टा D होबो D ए भगवान तमे कोन A B C तमे सब कहउछ ओडे A B C D भीतर कोडा तो गोटे होबो हैला नै कि
डी हम करेक्ट आंसर टिके क्वेश्चन टाको आउथे टिके भलसे पढो माने मु कहला परे मते जदी जणा न पड़ची ताले यू क्वेश्चन इज डिस्प्लेड आराम से पढी के आंसर करो गोटे गोटे छोट छोट जिनस टिके कंफ्यूजन ही आउची क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देले हे जिवो during CPR which finding is the most reliable indication to reassess the patient for return of spontaneous circulation the patient shows signs of life such as purposeful movement or normal breathing the rescuer has completed exactly 5 cycles of CPR the AED battery indicator changes chest compression depth become easier to achieve गलत हो गया कोई बात नहीं इतना चलता है question number 25 it will be the patient shows spontaneous circulation देखिए return जदि देखा जाउची त माने patient shows the signs of life such as purposeful movement or normal breathing purposeful movement or normal breathing option दा भलसे पढ नथिलो ना हां से ठीक है ऑप्शन उडा भलसे पढी के जिवो अच्छा आ गुटे ट्रिक कहबी देखो तमे चारटा ऑप्शन तम पाखरे रहउची ठीक अछि चारिटा ऑप्शन तम पाखरे रहउची तुमको गोटे करेक्ट ऑप्शन जे पहुंचे माने फैक्चुअल क्वेश्चंस गुडा तो अलग कथा फैक्चुअल क्वेश्चन गुडा तो अलग कथा किंतु नॉर्मल जो क्वेश्चंस गुडा रहउची हैला सेरा देखिबो तमे ऊपर तळ हेगरी थाउची ठीक अछि अच्छा तो ए भितरे सबुड पढिबा केबुड आरंभ करिवो जानछ ना पढिबा कोड आरंभ करिवो जानछ ना सबुड बड़ ऑप्शन ता पढिबा आरंभ करिवो हैला सब बड़े काम दिए नहीं है ट्रिक ता हैला बट बड़ ऑप्शन ता पढिबा आरंभ करिवो से बड़ ऑप्शन ता प्राय टाइम ठीक थाए मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम से बड़ ऑप्शन ता ठीक थाए ठीक अछि जदी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन एबे 30:2 15:2 15:1 ए सब जिंस बोले कहले सेडा हमें फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भीतर हमें गेस कर परबेनी जोड़ा फैक्ट जिंस सेडा जानिया कथा हैला किंतु हमर ए टाइप रो क्वेश्चंस रे बड़ ऑप्शन ता आगे पढिबो प्राय टाइम सेडा ठीक थाउची किंतु बड़ ऑप्शन ता हमर तुमको ठीक लागिला परे मध्य कोन करबो अन्य ऑप्शन रो टिके ओवरलुक कर दबो हैला काले बाय चांस ठीक अछि अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ ऑप्शन नहीं ठीक था चलो ना मेरे को पता है अच्छा ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट a healthcare worker witnesses an adult suddenly collapse the patient is unresponsive and not breathing normally which sequence most appropriately reflects the initial BLS approach हाँ एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर परबो माने एका संगे रे तमे बड़ ऑप्शन देखिबो तापर दि तीनटा ऑप्शन रे दीटा ऑप्शन रे तमे खोजी एलिमिनेट करी दीटा ऑप्शन रे अटकेबो से केस रे प्राय तो बड़ ऑप्शन ता ही ठीक थाए हला सब बेले एप्लीकेबल नुहे ऑब्वियसली आई एग्री टू दिस हला बट जो जगह रे तमे ब्लाइंड गेस करबा जगह रे माने ब्लाइंडली गेस करबो ता अपेक्षा एमिति टिके करी टिप्स एंड ट्रिक्स नै गिरी जदी गेस करछ देयर आर चांसेस ऑफ इट बीइंग करेक्ट है ना चांसेस अच्छी करेक्ट हेबार तो से केस तुम अप्लाई कर पारिबो देखो क्वेश्चन नंबर 26 रे कोन हबो क्वेश्चन नंबर 26 लॉन्ग ऑप्शन इज बी अच्छा एटा ही करेक्ट आंसर हैला assess the responsiveness activate the emergency response or get AED assess the breathing and pulse correct option B is next question answer during the adult CPR the rescuer notices that the chest is not rising adequately during the ventilation which action should be taken first increase the ventilation pressure substantially deliver 3 consecutive rapid breaths reposition the airway and improve the mask seal stop the compressions for 30 seconds stop the compressions for 30 seconds question number 27 we need to reposition the airway and improve the mask seal ठीक अछि next a healthcare professional is performing CPR on an adult using a bag mask device which finding most strongly suggests effective ventilation visible chest rise with each delivered breath increasing the abdominal distension increasing airway resistance with no chest movement rapid inflation of the bag without the chest movement question number 28 कौन हवा it is visible chest rise with each delivered breath visible chest rise with each delivered breath ठीक अछि question number 28 done
Asa, next question number 29. During resuscitation, a capnography monitor is available. Which finding is most useful for assessing the effectiveness of the chest compressions during the CPR? Increasing end tidal oxygen concentration, end tidal carbon dioxide level, peripheral skin temperature, respiratory rate displayed by the monitor. It is end tidal carbon dioxide level. End tidal carbon dioxide level will be the correct answer. 29 da 29 da A hava hai cartoon. B hava correct answer. End tidal carbon dioxide level. Yes. B. Biswarupa. Yes. Yes. Next, EtCO2 level dekha. A sudden sustained increase in the EtCO2 end tidal carbon dioxide level during the ongoing CPR may be an important indicator for severe airway obstruction, return of the spontaneous circulation, worsening hypoxemia, development of hypothermia. Number question number 30. Sustained increase in EtCO2 during the ongoing CPR may result in return of the spontaneous circulation. Return of spontaneous circulation. गलत हो गया? Capnography is the instrument to monitor the EtCO2 level. Yes, Sangeeta. ठीक ଅଛି. Next question jiba 31. Which factor is most likely to decrease the quality of chest compressions during the prolonged resuscitation? Excessive compression depth within the recommended limits, rescuer fatigue, appropriate hand positioning, complete chest recoil. Complete chest recoil. Question number 31. देखो जो आमर रेस्क्यूअर फैटिक जो आमर कौन करा जाउची ना क्वालिटी आमर चेस्ट कंप्रेशंस रो डिक्रीज हो जाई पारे जेहेतु आमर फिजिकल एग्जॉस्शन देखा जाउची रेस्क्यूअर माने कंप्रेसर्स माने को भितरे हैला फिजिकल ये देखा जाउची तो सेति पई बोली फैटिक हेबार चांसेस रहउची तो से केस रे आमर कंप्रेशंस रो क्वालिटी डा आमर डिक्रीज हो पारी तो रेस्क्यूअर फैटिक इज द रीजन बी हबो एही गोटे बी कइनो गोटे भी कहन क्वालिटी ऑफ चेस्ट कंप्रेशन कथा पचारछि क्वालिटी ऑफ चेस्ट कंप्रेशन कथा पचारछि तो हमर रेस्क्यूअर जते बेले चेस्ट कंप्रेशन दोउछि जेहेतु सेटा रे हमर फिजिकल एग्जॉस्शन इंक्लूडेड हेकि रहउछि से जगह रे तो सेति पई बोली क्वालिटी रे हमर फरक पड़ी पारे तो से केस रे कोन होउछि वी कैन रेस्क्यूअर फैटिक इज वन ऑफ द रीजन जोडा रे कि हमर क्वालिटी ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन प्रोलॉन्ग रिससिटेशन टाइम रे हमर देखा जाउछि बोर्ड नॉट क्लियरली विजिबल ऑलरो हाँ एबे क्लियर हैला ओके चलो एबे ठीक कहबो देखो नेक्स्ट a patient in cardiac arrest has an advanced airway placed during the CPR एटा कोन ऊपर को पड़ेला ठीक है patient in cardiac arrest has an advanced airway placed during the CPR. Which statement regarding the chest compression is most appropriate? A. Compression should be paused every 2 breaths. Compression should continue continuously while ventilation is delivered asynchronously. Compression should be stopped every 15 seconds after each ventilation. Compression rate should be reduced to 60 minutes. Come about the question. Amara option number B will be the correct answer. Compression should continue continuously while ventilation is delivered asynchronously. है ना asynchronous delivery देखा जाबो ventilation रे yes okay B हबा correct answer. Question number 33. During the CPR, the EED announces shock advised. Which action is essential immediately before the shock delivery? Option number A, ensure all rescuers are clear of the patient. Option number B, check the carotid pulse for 30 seconds. Option number C, remove the AED pads. Option number D, administer 2 rescue per breath. 2 rescue breath administer करिबा कोन करिबा क्वेश्चन नंबर 33
Question number 33 होची A. Ensure all rescuers are clear of the patient. All rescuers are clear of the patient. Next, question number 34. An AED is being used on an adult patient with a medication patch on the chest where a pad needs to be placed. What should the rescuer do? Place the pad directly over the medication patch. Ignore the patch because it does not affect the defibrillation. Remove the medication patch and wipe the area before applying the pad. Apply both AED pads over the medication patch. Question number 34. Question number 34. AED यूज होची गोटे अडल्ट पेशेंट ऊपर आ जोडी के मेडिकेशन पैड ता चेस्ट with the medication patch on the chest where the pad needs to be placed. The AED amar rescuer कोन करबा दरकार. We need to remove the medication patch and wipe the area before applying the pad. हैला ताको वाइप करिक तापरे जाइगे हमें पैड को अप्लाई करबा. Next, a patient with cardiac arrest has a hairy chest that prevent adequate AED pad adhesion. Okay. What is the most appropriate approach? Avoid AED use until the chest is completely shaved. Apply the pad over the hair without concern. Use water to flatten the hair before applying the pads. Remove the excessive hair rapidly from the pad sides if it interferes with pad adhesion. Yes. कौन करेगा? Hairy chest थिबा जदी जो जगह रे हैला 35 होची. We need to remove the excessive hair rapidly from the pad side if it interferes with the pad adhesion. हैला pad adhesion रे जदी किछ interference होची ताले we need to quickly remove the excessive hair. Next question. An adult patient has a pulse but is breathing inadequately. The nurse provide rescue breaths. Which observation would indicate that ventilation is being delivered appropriately? Visible but gentle chest rise, marked gastric distension, no chest movement with each breath, forceful ventilation producing the coughing. Forceful ventilation producing the coughing. Yes. कौन देखा जी बड़ी? Visible but gentle chest rise. Visible but gentle chest rise. इंटरनेट इश्यू थिला, इट्स ओके, कोई बात नहीं हैला. पर देखते बा किछ असुविधा नहीं. मुझ शेयर भी कर देबी तमान को पीपीटी टा. Next. A patient suddenly collapses and has no pulse. The monitor displays an organized electrical rhythm, but there is no palpable mechanical circulation. This situation represents ventricular fibrillation, pulseless electrical activity, sinus tachycardia, ventricular tachycardia with a pulse. किछ असुविधा नहीं. एबे टू जॉइन करो, एबे टू स्टार्ट करबा. Yes, question number 37. It is pulseless electrical activity. Pulseless electrical activity एटा को हमरे represent करछे condition टा हैला. A C हबो, A B हबो. हे भगवान, no pulse कथा कहि परा. No pulse, no palpable mechanical circulation. को condition टा सेडा non-shockable rhythm, pulseless electrical activity हैला. Pulseless electrical activity. Next. Which of the following is a potentially reversible cause of cardiac arrest represented by the HS and TS framework? Hypovolemia, hypertension, hyperglycemia, hyperreflexia. 38. A condition na kano? It is hypovolemia. Hypovolemia ra ko situation? Low blood volume. Low blood volume. Hello? Yes. B is the right answer. A is the right answer. Next. A patient in cardiac arrest has severe blood loss before the collapse. Which reversible cause should the resuscitation team particularly consider? Hypovolemia, hyperthermia, hypoglycemia alone, hypernatremia. Hypernatremia. Number 39. Yes. Cardiac arrest जो जगह देखा जाउची ता माने आउ ब्लड लॉस भी देखा जाइची. ब्लड लॉस देखा जाइची माने कोन? लो ब्लड वॉल्यूम. तो संगे संगे आगो जे हमरो रेसिसाइटेशन टीम कोन करबो? आगो हाइपोवोलेमिया कंडीशन टा को कंसीडर करबो. ब्लड वॉल्यूम टा को चेक करबो आगो हैला. Next, which combination correctly represents two important T
causes of potentially reversible cardiac arrest: tachycardia and thrombocytosis, tension, pneumothorax and cardiac tamponade, thyrotoxicosis and tremor, thrombocytopenia and tetany. कौन हम इंपोर्टेंट टी हो कौन बी हाँ बी टेंशन न्यूमोथोरैक्स एंड कार्डियक टैम्पोनेट टेंशन न्यूमोथोरैक्स माने कौन एयर ट्रैप्ड इन द प्लूरल स्पेस आउ टैम्पोनेट रो माने होची फ्लूइड trapped in the pericardial space. Pericardial space. Hello? Yes. Next question also. 41. During resuscitation, a patient develops sudden unilateral absence of breath sounds, severe hypotension, and increasing difficulty with ventilation. Which reversible cause should be strongly suspected? Hypoglycemia, tension pneumothorax, hyperkalemia, cardiac tamponade. Severe hypertension, increasing difficulty in ventilation. है ना difficulty in ventilation कौन होगा air trapped in the lungs, tension, pneumothorax. Very good. Next question. Which physiological effect of high quality chest compression is most important for maintaining the circulation during the cardiac arrest? Generation of the blood flow to the vital organs through the repeated chest compression and recoil, complete restoration of spontaneous cardiac contraction with every compression, elimination of all pulmonary vascular resistance, prevention of all myocardial oxygen consumption. All myocardial oxygen consumption. 42. 42. Physiological effect of high quality chest compression is most important. Circulation को maintain करिया पाएं बोली कोई जिनिसटा सबुठ important. 42. It will be generation of the blood flow to the vital organ through the repeated chest compressions and recoil. एरा होची most important जो जहाँ द्वारा की compressions देला बेलो को हमारा circulation टा मुझे regulated way रे चली. Next. 43. A rescuer performing CPR notices that compressions are becoming progressively shallower because of fatigue. What is the best intervention? Decrease the compression rate, stop the CPR for several minutes, change the compressor while minimizing the interruption, replace the chest compression with rescue breathing. Question number 43. Question number 43. Yes. कंप्रेशन सोडा को जदि हमर धीरे धीरे ही जाउची शालो ही जाउची काहेकि ना फैटिग पाई बोली ए कंडीशन टा कोन रेस्क्यूअर फैटिग बोली जो कहा जाए रेस्क्यूअर फैटिग बोली कहा जाए तो ए जिंसटा को हमें प्रिवेंट करबा पाई बोली हमें टाइम टू टाइम कंप्रेसर को चेंज करबा हला चेंज द कंप्रेसर व्हाइल मिनिमाइजिंग द इंटरप्शन माने जेमिति कि हमर कंप्रेशन देबारे कोनोसी इंटरप्शन हबनी किंतु कंप्रेसर सोडा को टाइम टू टाइम हमें चेंज करूथले कोन जे हमर ब्रीथिंग रो जो क्वालिटी टा सॉरी जो कंप्रेशंस रो जो क्वालिटी टा हमर जेमिति कंप्रोमाइज न होवे है ना compression रो क्वालिटी जेमिति कंप्रोमाइज न होवे. Next question number 44. An unconscious adult is found with a suspected cervical spine injury. The airway must be opened because adequate ventilation is not possible. Which principle is most appropriate for airway management? Option number A. Airway management should always be delayed until the cervical spine imaging. Maintain the spinal precautions while prioritizing airway and oxygenation. Never move the patient's head under any circumstances. Perform the abdominal thrusts before opening the airway. Question number 44. Question number 44. Yes, suspected cervical spine injury देखा जाउची spine injury suspect करा जाउची तो airway ए जगह open रहबा दरकार so that adequate ventilation हमरो ए जगह रे माने possible नहीं जदी तो adequate ventilation पई बोली airway हम ए जगह रे खोला रहबा दरकार हैला तो ए केस रे कोन करबा we need to maintain this spinal precaution while prioritizing the airway and oxygenation. B correct option हैला. Okay, next question number 45. Which finding indicates that
An unconscious patient should not be managed simply by placing them in the recovery position. The patient is breathing normally and has a pulse. The patient remains unresponsive but has normal breathing. The patient has absent or abnormal breathing. The patient has no obvious trauma. Question number 44. Sorry, question number 45. कौन होगा? Good afternoon. Good afternoon, Mamta. The patient has absent or abnormal breathing. Hello? Patient has absent or abnormal breathing will be the correct answer. Next. A healthcare worker encounters an unconscious adult who has a pulse and normal breathing but cannot maintain the airway independently. Which consideration is most appropriate? Option number A, ensure airway patency and place the patient appropriately while monitoring continuously. Begin chest compressions immediately. Administer abdominal thrusts. Give repeated rescue breaths despite normal breathing. Question number 46. Question number 46. नॉर्मल ब्रीदिंग अच्छी किंतु एयरवे इंडिपेंडेंटली मेंटेन करि पारनी पल्स और नॉर्मल ब्रीदिंग ठीक अच्छी किंतु अनकॉन्शियस अच्छी हैला तो से केस रे हमें कंप्रेशंस देबा दरकार नहीं एयरवे जदी ठीक अच्छी एंश्योर एयरवे पेटेंसी एंड प्लेस द पेशेंट अप्रोप्रिएटली व्हाइल मॉनिटरिंग कंटीन्यूअसली हैला प्लेसमेंट ठीक रहबा दरकार तारो प्लेसमेंट ठीक रहबा दरकार नेक्स्ट Question number 47. During adult CPR, which combination most accurately represents the major component of high quality CPR? Option number A, rapid compression, frequent interruption, and forceful ventilation. Option number B, appropriate rate and depth, complete recoil, minimal interruptions, and avoidance of the excessive ventilations. Option number C, slow compressions, maximal depth, and prolonged pauses. Option number D, continuous ventilation with intermittent compressions. With intermittent compressions. कौन होगा question number 47? कौन होगा? B, appropriate rate and depth, complete recoil, minimal interruptions, and avoidance of excessive ventilation. Hela? Next, question number 48. A patient regains consciousness after successful resuscitation and begins breathing normally. Which action is most appropriate immediately after recognition of ROSC? ROSC. Discontinue all monitoring because circulation has returned. Continue routine CPR for another 5 minutes. Provide ongoing assessment and post-cardiac arrest care while maintaining airway, breathing, and circulation. Removing all monitoring equipment immediately. Question number 48. कौन हम ROSC माने कौन? ROSC माने हला return of spontaneous circulation. Return of spontaneous circulation. We need to provide ongoing assessment and post cardiac arrest care while maintaining the airway, breathing, and circulation. ABC को circulate करेगी, regulate करेगी, हमें क्या करेगा? Next, which situation is most likely to require 2 rescuer BLS rather than single rescuer BLS? A trained healthcare team is available to provide coordinated resuscitation. A patient has mild dizziness with a normal pulse. A conscious adult has a minor airway irritation. A stable patient requires routine vital sign monitoring. Question number 49. Long answer applicable. अच्छा अच्छा. It is a trained healthcare team is available to provide the coordinated resuscitation. है ठीक है. Next question number 49. During a resuscitation attempt, the team leader instructs the compressor to minimize the pauses before and after rhythm analysis. The primary rationale is to increase the patient's body temperature, maximize the time during which effective chest compressions generate blood flow, prevent all possible arrhythmias, reduce the need for airway management. कौन हबो? एडारे मते से अप्लाई करिवो कि? एडारे भी से अप्लाई करिवो ना कोन? एडा भी ठीक हबो हैला maximize the time during which effective chest compressions generate the blood flow. ठीक अछि? तो आजिरा क्लास एतिकी जाई थिला ठीक अछि?
आज क्लास केमिति लागिला कोन लागिला सेटा मते निहाती कमेंट सेक्शन रे जणेबो हैला और नेक्स्ट कमिंग सेशंस रे वी विल बी डीलिंग विथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ओबीजी आ ए सब कंपोनेंट उडा ए सब जिंस उडा हमें डील करबा ता संगे रे ठीक अछि तो सेति पई बोली बी रेडी एवरीवन हैला बी रेडी आ समस्ते कंटिन्यू करू थाओ पाठ पढा पढी सब कंटिन्यू करू थबो पुनी देखा हबो हमर आ गुटे सेशन रे अंटिल देन सी यू एवरीवन थैंक यू सो मच yes thank you so much for joining prepare well do well all the best see you next time jai jagannath